Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of computer awareness, which is going to be special for you people that will help you in banking, SSC, JK, SSB, UGC NET, police, railway and in other state level exams. As आप यहाँ पे देख सकते हैं some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be the most important section for you people that will help you in banking, PO clerk, SSC, JK, SSB, UGC NET, railway, police and in other state level examinations. और मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें each chapter, each part at least twice, and they can also practice MCQ, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे ऑल्सो फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. स्पेशली आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं आपसे PDF शेयर करूंगा. अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटीरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. एंड अनटिल हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं 3 MCQ PYQ सेट्स फ्रॉम दिस चैप्टर इन विच वी हैड डिस्कस्ड एट लीस्ट 65 क्वेश्चंस. एंड ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. वीडियोस आर अवेलेबल देयर, यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस. अदर देन दैट हमने आल्सो डिस्कस किया है थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन डिटेल. आप जाके उन वीडियोज़ को आल्सो देख सकते हैं. And today this will be our 4 MCQ PYQ set from this chapter. So let's start with the first question. The question is, which of the following printers are you sure will not to use if your objective is to print on multiple carbon forms? Your options are 1 daisy wheel, 2 dot matrix, 3 laser and 4 thermal. Here the correct answer is option 3 and 4. Both of these are correct. Let's see the explanation. If you want to print on multiple carbon forms or copies, then usually you are not going to use laser or thermal printers because अगर आप मल्टीपल कार्बन फॉर्म्स और कॉपीज़ पे प्रिंट करना चाहते हैं दैन उसके लिए ज़रूरत पड़ती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, जो कि बेसिकली ट्रांसफ़र करते हैं मार्क फ्रॉम वन लेयर टू अनदर. सो जो लेज़र प्रिंटर्स हैं दीज आर बेसिकली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो कि यूज़ करते हैं हीट एंड टाउनर पाउडर टू फ्यूज़ एन इमेज ऑन टू द पेपर. सो दैट्स वाई हम इन प्रिंटर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं टू प्रिंट ऑन मल्टीपल कार्बन कॉपीज़. एंड थर्मल प्रिंटर्स, these printers are also non-impact printers जो कि यूज़ करते हैं हीट टू एक्टिवेट केमिकल्स इन कोटेड पेपर टू फॉर्म एन इमेज. दैट्स वाई ये जो प्रिंटर्स हैं इनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं टू प्रिंट ऑन मल्टीपल कार्बन कॉपीज़. देयरफॉर प्रिंटर्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिंट ऑन मल्टीपल कार्बन कॉपीज़ इंक्लूड डेज़ी व्हील प्रिंटर एंड dot matrix printers. Both of these are the impact printers. Therefore printers जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं to print on multiple carbon copies or forms are laser and thermal printers. Hence both of these options जो हैं that are our correct answers. Now let's discuss another question. The question is, laser printers belongs to. Your options are 1 line printer, 2 page printer, 3 band printer and 4 dot matrix printer. Here the correct answer is option 2 page printers. Let's see the explanation. जो laser printers हैं these printers generally work by printing an entire page at a time rather than line by line or character by character, which makes them page printers rather than line or dot matrix printers. Now let's also talk about other options. If we talk about option 1 line printer, it is incorrect because जो printers हैं these printers print one line at a time like drum or chain printers. Then option 2 page printer which is our correct answer because ये जो printers हैं these printers print entire page at once. और ये जो printers हैं these printers include laser printer and inkjet printers. Then option 3 a band printer, it is also incorrect because ये जो printers हैं these printers use rotating band with characters to print characters. और ये जो printers हैं इनको जनरली यूज़ किया जाता है इन हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटिंग. देन ऑप्शन 4 डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि प्रिंट करते हैं कैरेक्टर बाय यूजिंग टाइनी डॉट्स. देयरफॉर जो लेज़र प्रिंटर्स हैं दीज printers process and prints full page at once. That's why they fall under the category of page printers. Hence जो option number 2 है that becomes our correct answer. Now let's proceed to another question. The question is, a hard copy would prepared on a. This question had been already asked in SBI Clerk 2013. Your options are 1 line printer,
2 dot matrix printer, 3 plotter, 4 typewriter terminal, and 5 all of these. Here the correct answer is option 5, all of these. Let's see the explanation. Basically जो hard copy है it is a physical or tangible printout और digital content और information, और हम हार्ड कॉपी को जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस प्रिंटिंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग लाइन प्रिंटर्स. ये जो प्रिंटर्स हैं दीज प्रिंटर्स इनको जनरली यूज़ किया जाता है फॉर हाई स्पीड प्रिंटिंग स्पेशली इन बिजनेस एनवायरनमेंट्स. देन डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, ये हमें इम्पैक्ट प्रिंटर्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रिंट करते हैं बाय यूजिंग टाइनी डॉट्स, और ये जो प्रिंटर्स हैं ये हमें सूटेबल देखने को मिलते हैं फॉर प्रिंटिंग ऑन कार्बन कॉपीज़. देन प्लॉटर्स जो हैं इनको जनरली यूज़ किया जाता है फॉर प्रिंटिंग लार्ज स्केल ग्राफिक्स, ब्लूप्रिंट्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स. देन टाइपराइटर टर्मिनल, it print characters on paper like typewriter which is not basically connected to the computer. Therefore all of these are the printing devices जिनको यूज़ किया जाता है to produce physical और hard copy output. है ना, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 है that is our correct answer. Now let's proceed to another question. The question is, who invented the 3D printer? This question had been already asked in SSC CGL 2016. Your options are 1 Nick Holoik, 2 Alice Howe, 3 Chuck Hole, and 4 Christian Huygens. Here the correct answer is option 3 Chuck Hole. Let's see the explanation. जो चक हुल है उसने इन्वेंट किया 3D प्रिंटर को इन 1983 with the invention of stereolithography, that is SLA, which became one of the first 3D technologies. और उसने also found किया 3D system company को for commercial 3D printing. Here the hence जो हमारा option number 3 है that becomes our correct answer. Now let us discuss next question. The question is, it is used to produce large drawings or images such as construction plans, blueprints for mechanical objects, etc. Your options are 1 printer, 2 plotter, 3 MICR, and 4 OCR. Just go ahead talked about it. Here the correct answer is option 2 plotter. Let's see the explanation. जो प्लॉटर्स हैं इनको जनरली यूज़ किया जाता है टू प्रिंट लार्ज ड्राइंग्स और इमेजेस सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान्स, ब्लूप्रिंट्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स. एंड अनलाइक रेगुलर प्रिंटर्स, जो प्लॉटर्स हैं दे यूज़ स्पेशल पेन्स और इंक जेट्स टू ड्रा कंटिन्यूस लाइन्स विच मेक्स देम आइडियल फॉर हाई प्रेसिशन टेक्निकल ड्राइंग्स. हैंस जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है दैट बिकम्स अवर करेक्ट आंसर. Now let's discuss next question. The question is, which type of devices are computer speakers or headphones? This question had been already asked in IBPS Clerk 2015. Your options are 1 input, 2 input output, 3 software, 4 storage, and 5 output. Here the correct answer is option 5 output. Let's see the explanation. जो कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स हैं बोथ ऑफ दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस, बिकॉज ये जो हेडफोन्स और स्पीकर्स हैं दे रिसीव ऑडियो सिग्नल्स फ्रॉम द कंप्यूटर दैट फर्दर कन्वर्ट्स देम इनटू दिस साउंड विच मेक्स देम साउंड आउटपुट डिवाइसेस. है जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 है दैट्स अवर करेक्ट आंसर. Now let's see the another question. The question is, which is not an item of hardware? This question had been already asked in IBPS Clerk 2013. Your options are 1 an MP3 file, 2 a keyboard, 3 a mouse, 4 printer, and 5 none of these. Here the correct answer is option 1 an MP3 file. Let's see an explanation. जैसे कि आप जानते हैं कि जो हार्डवेयर हैं दीज आर द फिजिकल और टेंजेबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर एट्सट्रा. वाइल जो MP3 फाइल है इट्स नॉट ए हार्डवेयर बट रादर इट इज़ ए सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजिटल फाइल जिसको जनरली यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरिंग ऑडियो. देयरफॉर इट्स नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट बट रादर इट इज़ ए सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजिटल फाइल. एंड जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है दैट्स अवर करेक्ट आंसर. Now let's proceed to another question. The question is, the transfer of data from a CPU to peripheral devices of a computer is achieved through. This question had been already asked in SSC CGL 2012. Your options are 1 interface, 2 buffer memory, 3 modems, and 4 I/O ports. Here the correct answer is option 4 I/O ports. Let's see the explanation. इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स और I/O पोर्ट्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन द CPU एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक
printers, keyboards, mice and external storage devices. Basically ये जो ports हैं, these ports provide necessary interface or ways for communication between internal and external components. While if we talk about other options like option 1, interface जो है it is incorrect because it is a general connection which has nothing to do with the data transfer. Then option 2, buffer memory जो है it is also incorrect because इसको यूज़ किया जाता है to store data temporarily which is not basically responsible for transferring data to peripherals. Then option 3, modems जो है it is also incorrect because जो modems हैं इनको यूज़ किया जाता है for network communication but not for general data transfer to peripherals. Hence जो हमारा option number 4 है that becomes our correct answer. Now let's proceed to another question. The question is, a parallel port is most often used by a. This question had been already asked in SSC CPO 2011. Your options are 1, printer, 2, monitor, 3, mouse and 4, external storage device. Here the correct answer is option 1, printer. Let's see the explanation. पैरेलल पोर्ट्स जो है इनको प्रीवियसली यूज़ किया जाता था फॉर कनेक्टिंग प्रिंटर्स टू द कंप्यूटर्स, और ये हमें मोस्ट कॉमन टाइप देखने को मिलता है सेंट्रोनिक्स इंटरफेस का, जिसको बेसिकली यूज़ किया जाता था टू सेंड डेटा इन पैरेलल और मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम फॉर फास्टर प्रिंटिंग. Let's also see why other options are incorrect. If we talk about option 2, monitor, it is incorrect because जो monitors हैं they use VGA, HDMI और display ports instead of parallel ports. Kindly let me know in the comment section what is the full form of VGA and HDMI. Then option 2, mouse जो है it is also incorrect because जो mouse है it connects to computer through serial PS2 or USB ports. Then option 4, external storage device, it is also incorrect because जो devices हैं these devices generally use USB, SCSI or other interfaces but not parallel ports. And जो हमारा option number 1 है that becomes our correct answer. Now let us discuss another question. The question is, USB in data cables stands for. This question had been already asked in IBPS Clerk 2014. Your options are 1, Unicode Smart Bus, 2, Universal Structural Bus, 3, Unicode Serial Bus, 4, Universal Smart Bus and 5, Universal Serial Bus. Here the correct answer is option 5, Universal Serial Bus. Let's see the explanation. The USB head stands for Universal Serial Bus. Basically it is a standard interface or port जिसको यूज़ किया जाता है to connect various peripheral devices including keyboards, mice, printers and other external storage devices to the computers or other digital devices, जो कि basically allow करता है users को for fast data transfer, plug and play functionality and power supply to connect other devices. Hence जो हमारा option number 5 है that is our correct answer. Let's proceed to next question. The question is, USB refers to. This question had been already asked in SSC MTS 2013. Your options are 1, a storage device, 2, a processor, 3, a port type and 4, a serial bus standard. Here the correct answer is option 3, a port type. Let's see the explanation. As discussed, जो USB head stands for Universal Serial Bus. It is basically a port type जिसको यूज़ किया जाता है for connecting various peripheral devices like keyboards, mice, flash drives and printers to the computer and other electronic devices. However, it is also important to note that कि जो USB है it act as a serial bus standard, means it defines how the data is transmitted between various peripheral devices, as well as it also act as a port. So जो USB है इसको classify किया जाता है as both port type and a serial bus standard. Hence जो हमारा option number 3 है that is our correct answer. Now let's move to the next question. The question is, which of the following are properties of USB? This question had been already asked in IBPS Clerk means 2017. Your options are 1, platform independent, 2, platform dependent, 3, source dependent, 4, software dependent and 5, software independent.
Here the correct answer is option 1, platform independent. Let's see an explanation. USB, that is Universal Serial Bus, it is basically designed as a standard और पोर्ट जो कि बेसिकली फंक्शन करते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स एज वेल एज अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, और इसको प्लग किया जाता है इनटू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू रन एनी ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करते हैं बाय इट्स ओन. Let's also see why other options are incorrect. If we talk about option 2, platform dependent, it is incorrect because USB is not platform dependent, but in fact it is a platform dependent because it works across multiple platforms like Windows, Mac OS, Linux, and even game consoles or smart TVs. Then option 3, source dependent, it is also incorrect because जो USB है it does not only work with certain brands or power sources, but rather it work with different devices that are from different manufacturers which draw its power from any compatible USB port like on a computer, charger or power bank. Then option 4, software dependent, it is also incorrect because कई USB devices जो हैं like printers और game controllers they need drivers और special softwares जो कि basically help करते हैं USB को to talk to the computer. And USB जो है it is itself a part of operating systems built-in support. Therefore जो USB है it's not fundamentally software dependent because बहुत सारी devices जो हैं that depends on USBs for full functionality. Then option 5, software independent, it is also incorrect because जो USBs हैं that are not fully software independent because बहुत सारी USBs जो हैं they need drivers to work properly like printers, webcams, etc. और जो USB टेक्नोलॉजी है it is itself based on hardware and firmware and not on a regular software. So we can say जो USB है it is a software based जिनकी जो फंक्शनलिटी है that depends on software drivers which is not completely software independent. Hence जो हमारा option number 1 है that is our correct answer. Let's move to the next question. The question is the dash dash format reduces an audio file to about 1/10 of its original size while preserving much of its original quality of the sound. This question had been already asked in SBI Clerk 2014. Your options are 1 DOC, 2 PNG, 3 GIF, 4 MP3 and 5 VMEG. Here the correct answer is option 4 MP3. Let's see an explanation. MP3 that is MPEG 1 audio layer 3. ये हमें पॉपुलर ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट देखने को मिलता है जो कि बेसिकली रिड्यूस करते हैं साइज ऑफ एन ऑडियो फाइल अप टू द 90% while maintaining its original sound quality. And this compression can be done through logic compression, removing inaudible sounds and optimizing data storage. Hence जो हमारा option number 4 है that is our correct answer. Now let's proceed to another question. The question is peripheral devices such as printers and monitors are considered to be dash dash. This question had been already asked in IBPS Clerk 2013. Your options are 1 hardware, 2 software, 3 data, 4 information and 5 source code. Here the correct answer is option 1 hardware. Let's see the explanation. Peripheral devices like printers and monitors, these are the physical or tangible components of computer system जो कि हम easily touch कर सकते हैं, देख सकते हैं, which makes them the part of hardware. Basically ये जो devices हैं these devices help computers in input, output and processing functions rather than in software, data and information. Hence जो हमारा option number 1 है that is our correct answer. Now let's move to another question. The question is external devices such as printers, keyboards and modems are known as. This question had been already asked in IBPS Clerk 2015. Your options are 1 add-on devices, 2 peripherals, 3 extra software devices, 4 PC expansion slot add-ons and 5 special buys. Here the correct answer is option 2 peripherals. Let's see the explanation. जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं लाइक प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एंड मोडेम्स इनको क्लासीफाई किया जाता है एज पेरिफेरल डिवाइसेस बिकॉज ये जो डिवाइसेस हैं इनको कनेक्ट किया जाता है टू द कंप्यूटर आउटसाइड द कंप्यूटर जो कि बेसिकली एक्सटेंड करते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर.
बट ये जो डिवाइसेस हैं दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स कोर सिस्टम। And जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज dash dash can interpret voice data into words and can be understood by the computer. This question had been already asked in IBPS Clerk 2014. Your options are 1 speech input hardware, 2 speech recognition software, 3 word recognition software, 4 talking software, and 5 other than those given as options. Here the correct answer is option 2 speech recognition software. Let's see an explanation. स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं दे इंटरप्रेट वॉइस डेटा एंड कन्वर्ट्स दैट डेटा इनटू द टेक्स्ट्स और वर्ड्स जो कि कंप्यूटर फर्दर समझता है। और वी कैन से ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सॉफ्टवेयर्स कन्वर्ट स्पोकन वर्ड्स इनटू द टेक्स्ट और कमांड्स जो कि कंप्यूटर प्रोसेस और समझता है। और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सिरी, अलेक्सा एंड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स as well as also in voice controlled applications. Hence जो हमारा option number 2 है that's our correct answer. Now let's also discuss another question. The question is dumb terminal have terminals, and this question had been already asked in IBPS PO 2015. Your options are 1 mouse, 2 speakers, 3 keyboards, 4 mouse or speakers, and 5 none of these. Here the correct answer is option 3 keyboards. Let's see an explanation. Dumb terminal जो है it's like a screen and keyboard with no brain that cannot process anything by its own. But rather ये जो terminals हैं these terminals basically send input to the main computer or server and shows what the main computer sends back, जो कि basically act करते हैं as a remote control window to more powerful systems. Hence जो हमारे option number 3 है that is our correct answer. Now let's discuss another question. The question is which one of the following input device is user programmable? This question had been already asked in IBPS Clerk 2015. Your options are 1 dumb terminal, 2 smart terminal, 3 VDT, 4 intelligent terminal, and 5 all of these. Here the correct answer is option 4 intelligent terminal. Let's see the explanation. Among the given options जो intelligent terminal है it is user programmable input device because जो terminals हैं these terminals have their own processing capabilities and memory which allows them to perform data processing tasks independently before transmitting information to the host computer. और जो user programs हैं they use these terminals to perform specific functions or customize their behavior. Let's see why other options are incorrect. If we talk about option 1 dumb terminal, it is incorrect because ये जो terminals हैं these are entirely depend on host computer for processing which have no independent processing capabilities or user programmability of its own. Then option 2 smart terminal जो है it is also incorrect because ये जो terminals हैं these terminals have some processing capabilities, but ये जो terminals हैं these are generally less programmable than intelligent terminals, and इनकी जो intelligence है that is usually built in for specific functions. Then option 3 VDT that is video display terminal is also incorrect because ये हमें generic term और general term देखने को मिलती हैं which is used for display devices, and कई input devices जो है like keyboard इन डिवाइसेस को बेसिकली यूज़ किया जाता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बट दीज आर नॉट द यूज़र प्रोग्रामेबिलिटी इनपुट डिवाइसेस. देयरफॉर जो की कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलिजेंट टर्मिनल का दैट इज इट्स एबिलिटी टू बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स. है ना जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज अवर करेक्ट आंसर. लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज input devices are used to providing the steps and tasks that computer needs to process data, and those steps and tasks are called. This question had been already asked in IBPS Clerk 2015. Your options are 1 program, 2 design, 3 information, 4 instructions, and 5 flow chart. Here the correct answer is option 4 instructions. Let's see the explanation. जो इनपुट डिवाइसेस हैं दे प्रोवाइड नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस जो कि गाइड करते हैं कंप्यूटर को ऑन हाउ टू प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इटसेल्फ. और जो इंस्ट्रक्शंस हैं दीज आर द सेट ऑफ
commands given to the computer in order to perform specific tasks. Hence जो हमारा option number 4 है, that is our correct answer. Now let us discuss last question of this session. The question is, for printing MICR characters, the ink used contains. This question had been already asked in RRP NTPC 2016. Your options are A. lead oxide, B. graphite, C. cuprous oxide, and D. iron oxide. You have to choose your option from the given codes below: 1B, 2C, 3D, and 4A. Here the correct answer is option 3D, that is iron oxide. Let's see the explanation. MICR, that is magnetic ink character recognition. ये जो टेक्नोलॉजी है, इट यूज़ इंक दैट कंटेन्स आयरन ऑक्साइड, बिकॉज ये जो इंक है ये हमें मैग्नेटाइजेबल देखने को मिलती है, जो कि बेसिकली अलाउ करती है मशीन्स को टू रीड द कैरेक्टर्स एफिशिएंटली. हैंस जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, दैट्स आवर करेक्ट आंसर. सो गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडे. इसी के साथ ही हमारा जो 3rd चैप्टर है वो एंड होता है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं. इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो. इसके अलावा आप आल्सो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, जहां मैं आपसे PDF शेयर करूंगा. अदरवाइज़ यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू Discipline Talk channel. Thank you for watching.